Welcome to the stream. Today's flight is from Lucknow to Kathmandu. The issue with the system. Right. Departure runway is Lucknow. Lucknow Ground Air India 112 tree, could you please send a ramp? Air India 112 tree, a ramp is on its way. Namaskar, we welcome you aboard. You are requested to switch off your electronic devices. Please keep your seat upright and seatbelt tightly fastened. Secure your tray table, footrest, and arm video unit and handset. As a safety precaution, passengers seated in the front row of each cabin are required to store their PTVs when instructed by the crew.
smoking, including electronic cigarettes, is not permitted on this flight. We are pleased to inform you that we have a sky buffet available to passengers between regular meal service. The cabin crew are here to make your flight comfortable. Do call us should you require any assistance. For your air travel related complaints and suggestions, you may log into Air India website and choose feedback for the same. We wish you a pleasant flight. Thank you. नमस्कार, कृपया अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। कृपया अपनी सीट सीधी रखें और सीट बेल्ट कसकर बांध लें। ट्रे टेबल, फुटरेस्ट, डिनाउम वीडियो यूनिट, हैंडसेट को नियत स्थान पर रख दें। सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक कैबिन की पहली पंक्ति में बैठे यात्रियों से अनुरोध है कि वह क्रू द्वारा निर्देश दिए जाने पर पीटीवी को उसके नियत स्थान पर रख दें। इस उड़ान में धूम्रपान एवं ई सिगरेट पीना मना है। हमें ये सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि नियमित खान पान सेवा के बीच हमारे यात्रियों के लिए स्काई बुफे उपलब्ध है। सभी कैबिन क्रू आपकी सेवा में हैं। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क करें। अपनी हवाई यात्रा संबंधी शिकायतें एवं सुझाव के लिए आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। Lucknow ground Air India 112 tree, could you please send the baggage? Air India 112 tree baggage is on the way. Lucknow ground Air India 112 tree, could you please send the catering truck? Air India 112 tree, the catering truck is on the road. Lucknow ground Air India Hotel India November Golf Juliet 14 IFR to Kathmandu, ready to copy. Air India Hotel India November Golf Juliet 14 is cleared to Kathmandu Airport as filed. Takeoff runway 27, climb and maintain 9,000 feet. Departure frequency is 120.75 squawk 1365.
Air India Hotel India November Golf Juliet 14 cleared to Kathmandu Airport is filed. Takeoff runway 27 climb and maintain 9,000 feet. Departure on 120.75 squawk 1365. Air India Hotel India November Golf Juliet 14 read back correct. Contact ground on 121.625. Good day. Lucknow Ground Air India Hotel India November Golf Juliet 14 with Golf ready to taxi IFR. Air India Hotel India November Golf Juliet 14 taxi to and hold short of runway 27 using taxiway Lima Alpha. Contact tower on 120.45 when ready. Taxiing hold short runway 27 using taxiway Lima Alpha Air India Hotel India November Golf Juliet 14. Lucknow Ground Air India Hotel India November Golf Juliet 14 requesting pushback. Air India Hotel India November Golf Juliet 14 pushback request accepted. Lucknow Ground Air India Hotel India November Golf Juliet 14 requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. Air India Hotel India November Golf Juliet 14 your request has been transmitted to the operator. Lucknow Ground Air India Hotel India November Golf Juliet 14 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left.
Air India Hotel India November Golf Juliet 14, your request has been transmitted to the operator. Lucknow Ground Air India Hotel India November Golf Juliet 14 requesting pushback tug to push the aircraft straight. Air India Hotel India November Golf Juliet 14, your request has been transmitted to the operator. Lucknow Ground Air India Hotel India November Golf Juliet 14 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. Air India Hotel India November Golf Juliet 14, your request has been transmitted to the operator. Lucknow Ground Italy 716 Tree Heavy Taxi to the gate. Ladies and gentlemen, welcome aboard Air India. Before we take off, we would like to inform you about flight safety features and procedures of this aircraft. Please pay close attention to this flight safety video. The use of mobile phones interferes with the aircraft systems. In the interest of safety, please ensure that your mobile phones are switched off or in non-transmitting mode such as flight mode or airplane mode throughout the flight. Laptop and electronic items may be used after takeoff only after consulting the cabin crew. Please ensure that all your hand baggage is properly stored in the overhead bins or under the seat in front of you. Aisles as well as exits must be kept free of baggage at all times. It is very important that you observe the fasten seatbelt sign whenever it is switched on. To fasten the seatbelt, push this fitting into the buckle, then pull the loose end of the strap to tighten it. To release the belt, lift this flap. Seatbelts must be securely fastened when the aircraft is taxiing, taking off, and landing, and whenever the fasten seatbelt sign is switched on during the flight. For your own safety, we would advise you to keep your seatbelt loosely fastened throughout the flight. Please keep your seats in an upright position. Secure tray tables, footrests, in-arm video units, and handsets. Infants should not be fed during takeoff, landing, and turbulence when the seatbelt sign is on. During takeoff and landing, the infant should be Seat-mounted emergency escape path lights will illuminate and guide you to the nearest exit. Passengers seated next to the exits should familiarize themselves with the operation of the exits. Please contact our cabin crew if you have any questions. To open the door, rotate the handle in the direction of the arrow marked on the door. Smoking and use of e-cigarette on board is strictly prohibited. Toilets are fitted with smoke detectors. It is an offense to tamper with them. In the event of a fall in cabin pressure, oxygen masks will drop automatically from the unit above you. Place the mask over your nose and mouth, tighten the elastic band over your head, and breathe normally. After firmly securing your own oxygen mask, please attend to children and others who might need help. Extra oxygen masks are provided for infants. Each seat is provided with a life vest. In the unlikely event of an emergency evacuation over water, you will be instructed by the crew to remove the life vest, slip it over your head, and secure the straps as demonstrated. To inflate the vest, pull down sharply on the red toggle in front. You can also inflate it by blowing into the red tube at the top. Each vest has a light which is activated when the battery comes in contact with water. Life vest should be inflated only when instructed by the cabin crew or just before leaving the aircraft. Crew will provide infant life vest for babies if necessary. In the unlikely event of an emergency landing, please adopt the brace position as shown on the screen. Please study the safety briefing card which is provided for each seat. If you have any concerns, please call the cabin crew who will be happy to assist you. Please note that exit signs on this airplane utilize this green symbol to identify the exits. This green symbol with arrows indicates the direction to the exit. Locate the exits nearest to you using these green symbols. The nearest exit may be behind you. Thank you, and we wish you a pleasant flight. देवियों सज्जनों, विमान के उड़ान भरने से पहले हम आपको इस विमान के उड़ान सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे। कृपया उड़ान सुरक्षा संबंधी इस वीडियो फिल्म को ध्यानपूर्वक देखें। मोबाइल फोन के प्रयोग से विमान संचालन में बाधा पहुंचती है। सुरक्षा के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि उड़ान के दौरान आपका मोबाइल फोन बंद है या नॉन ट्रांसमिटिंग मोड जैसे फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड पर है। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग उड़ान भरने के बाद कैबिन क्रू से पूछकर ही करें।
कृपया सुनिश्चित करें कि आपका हाथ का सारा सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या आपके सामने की सीट के नीचे ठीक तरह से रखा गया है। गलियारों तथा दरवाजों के पास कभी भी कोई सामान न रखें। अपनी खिड़की के शेड को हल्का करें। सीट बेल्ट बांधने का संकेत रहने पर कृपया इनका पालन करें। सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल फिटिंग को बकल में डालें और बेल्ट को कसने के लिए स्ट्रैप के ढीले सिरे को खींचें। बेल्ट खोलने के लिए इस फ्लैप को उठाएं। विमान के रनवे पर चलते, उड़ान भरते या उतरते समय तथा उड़ान के दौरान जब कभी सीट बेल्ट बांधने के संकेत हों तो सीट बेल्ट बांधे रखें। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया यात्रा के दौरान अपनी सीट बेल्ट ढीली कर बांधे रखें। कृपया अपनी सीट सीधी रखें। फुट रेस्ट, इनाम वीडियो यूनिट और हैंडसेट को नियत स्थान पर रखें। विमान के उड़ान भरते तथा उतरते समय तथा मौसम के खराब होने पर जब सीट बेल्ट बांधने के संकेत हो तो कृपया शिशु को दूध न पिलाएं। विमान के उड़ान भरते एवं उतरते समय शिशु को गोद में सीधा बिठाकर मजबूती से पकड़ें तथा शिशु को गोद में लिटाकर न रखें। इस विमान में 8 आपातकालीन दरवाजे हैं। कृपया नोट करें कि बाहर जाने के दरवाजों की पहचान के लिए इस विमान में बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से दर्शाया गया है। इन हरे संकेतों के साथ एरो के निशान बाहर जाने के दरवाजों को दर्शाते हैं। इन हरे संकेतों द्वारा आप बाहर निकलने के नजदीकी दरवाजों का पता लगा सकते हैं। नजदीकी दरवाजा आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। आपात स्थिति में सीट पर लगी बत्तियां जलेंगी और आपको नजदीकी दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगी। जो यात्री दरवाजों के पास बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो बाहर जाने के दरवाजों को खोलने की विधि को ध्यान से समझ लें। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल को दरवाजे पर दिखाए गए एरो की दिशा में घुमाएं। इस विमान में धूम्रपान एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना सख्त मना है। टॉयलेट में स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। स्मोक डिटेक्टरों से छेड़छाड़ करना अपराध है। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर आपके ऊपर के यूनिट से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन लेने के लिए मास्क को अपनी नाक और मुंह पर लगाएं। इलास्टिक बैंड को सिर के ऊपर कस लें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना ऑक्सीजन मास्क ठीक तरह से लगाने के बाद कृपया अपने पास बैठे बच्चों तथा सहयात्रियों की मदद करें जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। शिशुओं के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध हैं। हर सीट के लिए एक रक्षा जैकेट उपलब्ध है। आपात स्थिति में यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो क्रू द्वारा आपको रक्षा जैकेट निकालने के लिए कहा जाएगा। इसे सिर के ऊपर से पहने तथा रक्षा जैकेट की बेल्ट को कमर पर कस कर बांधें, जैसा कि आपको दिखाया गया है। रक्षा जैकेट को खुलाने के लिए सामने लगे लाल टॉगल को जोर से खींचें। आप इसे ऊपर लगी लाल ट्यूब में मुंह से हवा भरकर भी फुला सकते हैं। हर रक्षा जैकेट में एक बत्ती लगी हुई है जो बैटरी के पानी से छू जाने पर जल जाती है। रक्षा जैकेट को केवल क्रू के कहने पर या विमान से बाहर निकलने के तुरंत पहले फुलाएं। आवश्यकता होने पर क्रू द्वारा शिष्यों के लिए रक्षा जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी। आपातकालीन लैंडिंग की असामान्य स्थिति में कृपया स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार ब्रेस पोजीशन में बैठें। कृपया सीट पॉकेट में रखे गए सुरक्षा संबंधी कार्ड को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कैबिन क्रू से संपर्क करें जिन्हें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। कृपया नोट करें कि बाहर जाने के दरवाजों की पहचान के लिए इस विमान में बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से दर्शाया गया है। इन हरे संकेतों के साथ एरो के निशान बाहर जाने के दरवाजों को दर्शाते हैं। इन हरे संकेतों द्वारा आप बाहर निकलने के नजदीकी दरवाजों का पता लगा सकते हैं। नजदीकी दरवाजा आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। धन्यवाद। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। Lucknow Tower Air India Hotel India November Golf Juliet 14 ready for IFR departure runway 27. Air India Hotel India November Golf Juliet 14 QNH to 9.59er, wind 089er at 6. Cleared for takeoff runway 27. Crew, take your seat. Cleared for takeoff runway 27 Air India Hotel India November Golf Juliet 14.
120.75 Air India Hotel India November Golf Juliet 14. Goodbye. Varanasi Center Air India Hotel India November Golf Juliet 14 is at 2,500 feet climbing 9,000 feet. Air India Hotel India November Golf Juliet 14 Varanasi Center QNH to 9.59 radar contact. Continue to Gujam. Air India Hotel India November Golf Juliet 14 climb and maintain 9,000 feet. Expect flight level 350. Climb and maintain 9,000 feet. Expect flight level 350 Air India Hotel India November Golf Juliet 14.
Lucknow Ground Air India 112 Tree IFR to Kathmandu ready to copy. Air India 112 Tree is cleared to Kathmandu Airport as filed. Takeoff runway 09er climb and maintain 11,000 feet. Departure frequency is 120.75 squawk 4405. Air India 112 Tree cleared to Kathmandu Airport is filed. Takeoff runway 09er climb and maintain 11,000 feet. Departure on 120.75 squawk 4405. Air India 112 Tree readback is correct. Contact ground on 121.625 when ready to taxi. Good day. Lucknow Ground Air India 112 Tree with Golf ready to taxi IFR. Air India 112 Tree taxi to and hold short of runway 09er using taxiway Charlie cross runway 09er. Contact tower on 120.2 when ready. Taxiing hold short runway 09er via taxiway Charlie cross runway 09er Air India 112 Tree.
Lucknow Tower Air India 112 at runway 09 are ready for departure IFR to Kathmandu. Air India 112 QNH 29.59er wind 089er at 10. Cleared for takeoff runway 09er. Cleared for takeoff runway 09er Air India 112. Crew, take your seat. Lucknow Tower, Ifly 451 Heavy 15 miles west inbound Arnab Yankee runway 09er approach. Ifly 451 Heavy Lucknow Tower. QNH 29er.59er wind 089er at 10. Cleared Arnab Yankee runway 09er approach. Air India 112 contact Varanasi Center on 120.75. Good day. Cleared Arnab Yankee runway 09er approach Ifly 451 Heavy. One 120.75 Air India Mike India November Golf Juliet 14. Goodbye. Varanasi Center Air India Mike India November Golf Juliet 14 is passing 2,300 feet climbing 11,000 feet. Air India Mike India November Golf Juliet 14 Varanasi Center QNH to 9er.59er radar contact. Continue to Gujib. Air
Clear India Mike India November Golf Juliet 14 climb and maintain 11,000 feet. Expect flight level 350. Climb and maintain 11,000 feet. Expect flight level 350 Air India Mike India November Golf Juliet 14.